फ्रेंड्स, आजकल हम सिर्फ इंटरनेट का यूज़ ही नहीं करते बल्कि उस पर पूरी तरह डिपेंड्स भी है। जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाता है या बहुत ख़राब हो जाता है या कभी कभी तो चलता ही नहीं है, तो हमें लगता है कि हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट कनेक्शन काम कैसे करता है? वाईफाई राउटर से लेकर सारे डिवाइस, जैसे कि आपके होम नेटवर्क को बनाने वाले सभी कंपोनेंट अलग अलग डिजिटल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। लेकिन जो मॉडेम होता है वो एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है। ये आपके इंटरनेट को सेवा प्रदान करता है और आईएसपी से आने वाले संकेतों को लेता है और उसे प्रसारण के लिए अपने वाईफाई राउटर के लिए उन्हें इंटरनेट कनेक्शन में ट्रांसलेट करता है। मीन्स मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। मॉडेम इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। That means it has ability to modulate and demodulate the analog carrier signal for encoding and decoding digital data for executing. Modem is a hardware networking device that help to make connection with computer or other hardware component like as a switch or router for linking to internet. Modem are used for performing both activities like sending and receiving of the digital data in between with multiple computer system. Then this data is transmitted over the telephone lines with using V92 to analog modem, which helping out for converting this signal back to digital form or for readable format to computer. Modem plays many role as digital translator that help to get all information signal from cable, fiber or telephone line and convert it into accessible from your PCs. So friend, there are different types of modem which are used in computer networking. First type is dial-up modem. Dial-up modem transmit analog signal via telephone line. This modem is uses mostly to make connection with ISP using of analog signal. Then the second is cable modem. In the cable modem, to use coaxial cable, those are connected to the back edge of modem. Then third type is ASDL modem. ASDL stand for asymmetric digital subscriber line, and this type of modem use the telephone line for sending and receiving all information. Then the next type is DSL modem. DSL stand for digital subscriber line, and it is also known as broadband modem. DSL modem offer broadband service for using of different type of internet connection. The next type is external modem. External modem like as standalone modem because it doesn't integrate any router. This modem is connected with the computer through USB stick, Wi-Fi or internet cable. Router or modem combo. This type of modem is contained with router that allows several device and computer to attach with single network. Then next type is integrated modem. This modem is embedded into computer in the form of USB or PCI card. But this type of modem allows only single computer system to make connection with internet. The next type is onboard modem. Onboard modem are embedded into motherboard. So this modem has not any chance for removing, but it can be disabled using of jumper or BIOS setup. Removable modem. This modem can be inserted or removed as per the requirement. Wireless modem. Wireless modem is also known as radio frequency modem, and this modem are developed to work with cellular technology and wireless local area network. Then the next type is faxed modem. Fax modem is used for transmitting and receiving any document over the telephone line. ISDN modem. ISDN modem stand for integrated service digital network, and it provide to make communication standard for using of digital transmission of voice, video, data over wire of optical fiber. Then the last type is intelligent modem. Intelligent modem are more costly to other modem because it is able to diagnostic error checking with the modem itself.
सो फ्रेंड, ये था क्या मॉडेम क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स। सो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको सबसे पहले दिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।